Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject. Now in this lecture we will discuss some numerical related to design of shaft. लास्ट लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल देखे थे, वो भी डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट पे थे, पर वो दोनों न्यूमेरिकल बेसिक थे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के। और आज जो हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये समर 5, विंटर 9 और विंटर 11 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्टेटमेंट इज अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 12.5 किलोवाट that is the power at 300 rpm is supported in two bearings 750 mm apart. A pulley of 450 mm diameter is fixed at a distance of 200 rpm from one end of shaft. The belt passing over the pulley is vertical and transmission ratio is 2. The safe working stresses for the shaft material are 70 MPa, that is Newton per mm square, in tension and 56 MPa in shear. If the pulley weight is 600 Newton, design the shaft. Here we have to design, that is diameter of shaft, by considering weight of pulley and supported bearing force also. Now we will draw first of all its diagram. ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड और इसके जैसे ही और प्रॉब्लम है, उन सभी में सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। कॉन्सेप्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, वो सभी में सेम रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम को आप लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी वैल्यूज़ है वो आप खुद फाइंड आउट करो तो अच्छा रहेगा। और ये प्रॉब्लम स्टेप वाइज आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी विल ड्रॉ इट्स डायग्राम. दिस इज अ shaft which is supported by two bearing at its end. This is bearing number 1 and this is bearing number 2, and the distance between both the bearing is 750 mm. This is the length which we have in our statement. Now what they have given, that the pulley of 450 mm diameter is fixed at a distance of 200 mm from one end of shaft. Here the pulley is mounted from 200 mm distance from any one of bearing. We will take this bearing nearest because we have to calculate moment also, and the distance between the bearing and pulley center is 200 mm. Here I will write 200 mm distance, and I will draw side diagram, as this is the cross section of shaft and this is the cross section of pulley, over which two loads are there. This load is called as T1 load and this load is called as T2 load, which draw load W, that is load of pulley, which is equal to 600 Newton. Okay, then the remaining distance from pulley to the last bearing or second bearing is 550 mm. Okay, this is our diagram, and I will draw this diagram in notebook and we will solve this problem in notebook. Before that I will write given data and what we have to find. Here is the given data, and in right side I will write what we have to find. We have to find diameter of shaft, that is capital D, and we have the data, given data
P is equal to 12.5 kilowatt. N, that is RPM, is equal to 300. Then this is the distance which we will mention in diagram. Transmission ratio, that is T1 upon T2 is equal to 2. Then we have two working safe stresses of material. First one is 70 MPa, it is in tension, and 56 MPa shear stresses. That means 70 is equal to sigma T and 56 is equal to tau. Sigma T is equal to 70 MPa, that is Newton per mm square, and tau is equal to 56 MPa, that is Newton per mm square. And now we will draw its diagram. This is a diagram of shaft, the red color one, and over which we mounted one pulley at a distance of 200 mm from one end of bearing, and the small circle, this circle is cross section of shaft, and the outer circle is cross section of pulley. Now what we have told us in a problem that the pulley is having belt in vertical direction. So I will draw two forces that indicating force T1 and T2 by pulley itself, and the weight of pulley is at the center point, which is denoted by W, and we have the quantity of T1 and T2 ratio is 2. This is the force or tension on on a belt T1 and T2, tension 1 and tension 2. Now after completing the diagram, now we will solve primary things, that is torque, by using power formula, and then we use T1 and T2 formula. We know the formula for torque on shaft is by using the formula of power, that is P is equal to 2 pi Nt divided by 60, by which we will get value of torque in Newton meter. So we will multiply it by 1000 here, and then we will get value of torque in Newton mm. Now put the value of power P, 12.5 into 10 raised to 3, N is equal to 300, and we will get value of torque. Here I will write all the necessary value that we have in problems, and this value 60 into 1000, it get multiplied to the value of power, and then this term 2 pi into 300 get divided to other value, and we will get value of torque. Put your all the value in calci, use bracket properly, and the value of torque T is equal to 397.88 into 10 raised to 3 Newton mm. This is the value of torque T. Then we will put this value in next equation, that is T is equal to T1 minus T2 bracket complete multiply by dp, that is diameter of pulley, divided by 2, or we can call this as a radius of pulley. Now the main point here is
what is the meaning of this formula, why we use this formula. Before of that, you should know the meaning of torque. Then and then only you can able to understand how we write this formula. इसको आसानी से समझने के लिए एक पॉइंट है, इस टी वैल्यू को हम हमेशा बोलते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट. तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट टी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स रेडियस ऑफ shaft or radius of that element where we get the power. ये जो फॉर्मूला था T का, T इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज R, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो. सपोज ये जो शाफ्ट है ये रोटेट हो रहा है अभी 300 आरपीएम से, और आपको इसे ब्रेक करना है, मतलब स्टॉप करना है. और स्टॉप करने के लिए आपने फोर्स, मैन्युअल फोर्स अप्लाई किया हाथ से. अगर इसको होल्ड किया आपने, और होल्ड करने के बाद में अगर ये फोर्स, ये आरपीएम स्टॉप हो जाता है, ये शाफ्ट रोटेट होना स्टॉप हो जाता है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? जो कि आपने फोर्स अप्लाई किया था मैन्युअली फोर्स, तो फोर्स कितना हो गया? एफ फोर्स हो गया, जो कि आपने मैन्युअली अप्लाई किया है. कहाँ पे अप्लाई किया है? शाफ्ट के रेडियस पे अप्लाई किया है. ओके, तो ये हो गया टॉर्क, जो कि अप्लाई करने के बाद में, यहां पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये स्टॉप हो जाता है. और अगर इतना ही फोर्स अप्लाई करने के बाद में रेडियस पे ये स्टॉप नहीं होता, तो क्या कंसिडर करेंगे हम? इसका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया है उससे मैक्सिमम है. ओके, तो इसके बाद में ये जो अभी फोर्स जो हमने मैन्युअली अप्लाई किया था, वो अभी यहाँ पे कहाँ पे है? जो पुली हमने माउंट की है, वो पुली के दोनों साइड में जो बेल्ट दूसरी ओर पावर ट्रांसमिट कर रहा है. कौन सा फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है? T1 एंड T2 टेंशन से. तो ये हो गया फोर्स अप्लाई ऑन शाफ्ट. और ये कहाँ पे अप्लाई हुआ है? रेडियस पे, यहां से लेके यहां तक. ओके, और जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस मतलब क्या? पुली का रेडियस. पुली का रेडियस मतलब इसको हम डीपी से भी डिनोट करेंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ पुली डिवाइडेड बाय 2. यही हमने फॉर्मूला में यूज किया है. जो भी फोर्स है अप्लाई किया हुआ, ये जो फोर्स है ये कितना है? T1 माइनस T2 फोर्स. यहां पे हमने फॉर्मूला में लिख लिया T1 माइनस T2. ये होगा F क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज डायमीटर ऑफ पुली डिवाइडेड बाय 2. और अब हम क्या करेंगे? ये जो क्वांटिटी है, टी की क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट की है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. और पुट करने के बाद डीपी भी पुट कर देंगे, और T1 और T2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे. पर यहाँ पे हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू नहीं है, पर एक रिलेशन है T1 डिवाइडेड बाय T2 का. T1 डिवाइडेड बाय T2 कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T2 को 2 से. तो वैल्यू ऑफ T1 ये हो गई 2 इंटू T2. ओके, तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 टाइम्स ऑफ T2, और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. और ये पुट करने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 2T2 माइनस T2 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे क्या करना है हमें? ये T की वैल्यू जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख लेनी है. T की वैल्यू इज इक्वल टू, अब 2 टाइम T2 की वैल्यू है और ये 1 ही है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना रहेगा? T2, 1 T2, एक 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. T2 हमने यहाँ पे लिख लिया, और 450 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा 225. इसको यहाँ पे हमने लिख लिया. तो T की वैल्यू अब जो हमने फाइंड की है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, दैट इज 397.88. 397.88 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू T2 इंटू 225. Now we have only one unknown quantity, that is T2.
This 225 get divided to quantity of torque and we will get value of T2. Now the T2 becomes 1768.39 Newton. This is the value of T2. We know that T1 is equal to 2 times of T2. Now put the value of T2 in this equation. We will get the value of T1 as T1 is equal to 3536.77 Newton. This is Newton. Now we get two values, that is T1 and T2, and the total load on vertical pulley is T1 plus T2 plus load of pulley itself, that is W, and that total load is denoted by F is equal to T1 plus T2 plus W. Put the value of T1 and T2. We know the value of W is 600 Newton. Now after adding three value, F is equal to, that is total load on pulley is equal to 5905.06 न्यूटन. अब यहाँ तक हमने फोर्स F ये फाइंड आउट किया और ये कितना कहाँ पे एक्ट होगा. तो ये जो हमारी डायग्राम है उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे ड्रॉ करते हैं. ये हो गया लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन and load in downward direction, and this load is F, that is 5905.06 न्यूटन. अब यहाँ पे इसे हम RA ऐसे डिनोट करते और इसको RB ऐसे भी डिनोट कर सकते. ये हो गया रिएक्शन A एंड रिएक्शन B. We know the distance from RA to F, that is 200 mm, and total distance from RA to RB is 750 mm, and the distance from F to RB is equal to 550 mm. Now we have to use here bending moment because the load is applied by after inserting the pulley and belt. So here we have to consider bending moment and twisting moment also. Now this is the condition of combined bending and twisting moment. So we will solve the bending moment on shaft by using this diagram. और जब हम इस डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, इस डायग्राम को कंसीडर करके सिंपली सपोर्टेड बीम को, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट लेनी है. तो हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे ए पॉइंट पे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, और हम यहाँ पे वो पॉइंट लिख लेंगे टेकिंग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए. Okay, so RA becomes 0 because the perpendicular distance is 0. जब हम यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तब ये जो फोर्स है, ये फोर्स की परपेंडिकुलर मूवमेंट 0 हो गई, तो इसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे. बाकी के कौन से दो फोर्स है, एक तो F फोर्स है और दूसरा RB फोर्स है. मूवमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने सॉम में देखा था. अब यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट लेते वक्त इसको यहाँ पे हमें ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट हो जाएगा ये. ओके, तो फोर्स कितना है F, और इसकी मूवमेंट कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव. ओके, तो हम यहाँ पे मूवमेंट लेंगे. फर्स्ट क्वांटिटी है F क्वांटिटी, F इंटू 200 विच इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. देन
नेक्स्ट वन इज RB. नाउ RB को भी हम इसे रोटेट जब करेंगे, तब इसको रोटेट ऐसे जब करेंगे पॉइंट A पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होएगा. एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव साइन. और टोटल डिस्टेंस कितना है 750. सो एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स नेगेटिव साइन. और ये टर्म आ जाएगी RB इंटू 750 mm इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कौन सी देखो, RB. F तो हमें पता है, F इज नथिंग बट फोर्स apply on vertical pulley, that is 5905.06. Now put all the necessary value in this equation. Then this term minus RB into 750 comes to right side and it get plus, and we will write it as RB into 750. अब यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है, मतलब ये 750 RB को मल्टीप्लाई, तो इस साइड आते वक्त ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे 750 से. नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RB एंड RB बिकम्स, वैल्यू ऑफ RB इज 1574.7 न्यूटन. ओके, नाउ put this value of RB in above equation, that is RA plus RB equal to 5905.06. okay, put this value in this equation. What we will get, we will get the value of RA, and RA is equal to 4330.46. This is the value of RA. This equation is from diagram, that is positive dimension RA and RB are in positive direction, so we will add this, and F is in negative direction, so we subtract it, is equal to 0. Simply I have written here RA plus RB minus value of F, and it get into right side as a plus value. But here we need the value of M, that is bending moment at loading condition. And where is the loading condition? Loading condition is at pulley point. Now we will write here the pulley point as a P point, and the bending moment is nothing but RA into perpendicular distance. Okay, and the value of RA is 4330.46 into perpendicular distance is 200 mm. Now the M is nothing but the bending moment at point P, so it is RA into 200 mm is equal to 866.09 into 10 raised to 3 Newton mm. Okay, this is the value of M, and we need this value while solving the problem by considering maximum shear stress theory and minimum principal or maximum principal stress theory, because the problem is of a case number 3, that is shaft subjected to combined bending and twisting moment. Now up to here we calculate the value of M, RA, RB. Now we will solve it by for a two condition, that is maximum shear stress condition and maximum principal condition. Here I will write diameter by shaft subjected to maximum shear stress condition, and we know that the formula for maximum shear stress condition, that is TE is equal to under root K of B into M square bracket square plus KT into capital T, that is torque square. Now we know that the value of KB and KT
here 1. So 1 square is 1. So I will write here equation again by simplifying or adding the value of kb and kt. Te is equal to capital M square plus t square, and m is nothing but bending moment and t is nothing but torque, and put both the value here that we have calculated. Here I will write both the value, that is value of m and value of t. First of all, find the value of m, or take the value of m in calci and take its square. Then take the value of t, that is 397 into 10 raised to 3, and take its square. Add both the term and then take its under root. The value of Te becomes 93.11 into 10 raised to 3 Newton mm. This is the value of torque or Te. This value is of equivalent torque, but we have to find diameter of shaft, and for that purpose we use equating torque formula, that is T is equal to pi by 16 into tau into d cube. We know that this formula, but here we have to use value of T as Te, that is equivalent torque, and tau as a tau max. Put all the value that we have calculated. Value of Te is equal to 953.11 into 10 raised to 3 is equal to pi by 16 into 56 into d cube. Now this value comes in denominator and it get divided to value of t, and we will get value of d cube. And by taking cube root of that quantity, we will get value of d as 44.25 mm, that is 45 mm. Okay, this diameter is on the basis of maximum shear stress theory. Now the second case is diameter of shaft on the maximum principal stress condition, and we know that the formula for that is me is equal to half in bracket kb into m plus under root kb into m bracket square plus kt into torque, that is t bracket complete, and its square. Now put the value of m and t, that is bending moment and torque, and the value of kb and kt are 1, and we will get value of equivalent bending moment is equal to 909.6 into 10 raised to 3 Newton mm. This is the value of me, and we know that sigma max, or the bending moment or bending stresses, is 32 me divided by pi into d cube. Put the value of sigma max, that is 70, and we have in our problem statement 32 as it is. Me that we have find it here 909.6 into 10 raised to 3 multiply by 909.06 into 10 raised to 3 divided by pi into d cube. Now the d cube comes here and 70 is in denominator instead of t. Solve this side first of all, and we get the value of d cube, and by taking the cube root, d is equal to 50.96 mm, that is d is equal to
51 mm, and the diameter D is taken as the larger of two value, that is diameter by maximum shear stress theory, which is nothing but 45 mm, and diameter by maximum principal theory is 51 mm. So we will take 51 mm diameter for shaft. So it cannot be fail in bending moment and torsion condition also. This is the formula, or this is the main design of shaft for both the condition, that is torsion and bending moment. And this type of problems are asked in examination for 6 to 8 marks. Thank you.